जैसे मैं वीडियो चलाती हूँ ये लोग कंस्ट्रक्शन तो my hair is looking like shit for some. Hello guys and welcome back again to my channel, and today we are going to talk about not my shit hair but about the questions that were asked to me in my interview and as well in my mid-eval and final eval. For those who don't know what is mid-eval and final eval is the evaluation that happens in the middle of your PhD sessions, and final eval is the evaluation that happens at the end of your PhD session. So let's start. And यहाँ पे थोड़ा सा construction का काम चल रहा है. I'm really sorry for this, but I can't delay this video any longer. Okay, so I'm starting with the day I gave my interview. In the first round, which is called GD or group discussion round, they ask one question to all the participants. So for our GD round, the question was, what was the last day you were really happy and excited about? So now everyone has their separate answer for this. So how to answer this question? First, you need to say your answer. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी एकदम like professional वाला. पहले अपना आंसर बोलो कि मैम this is the last day that I was really excited and happy about. Then explain क्यों था, ठीक है. फिर पूरा एक्सप्लेन किया कि इसलिए था क्योंकि मैंने ये किया था. एंड लास्ट में गिव योर कंक्लूजन. अब ये कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन कैन मेक योर ब्रेक योर आंसर. आई एम टेलिंग यू. अगर आपका पूरा आंसर सोचो कि उतना अच्छा नहीं था, मीडियोकर था, लेकिन आपने कंक्लूजन अच्छा दे दिया कि हाँ इसलिए whenever I revisit that day I feel really happy, whenever I'm sad I revisit that day to make myself happy. ये सब अगर बोल दोगे ना तो your answer will be a little bit more like a little bit better, कि वो सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ इसने खत्म अच्छे से किया था. So I will now tell my answer. So my answer was, ma'am, the last day I was really excited and happy about was my best friend's birthday. As I was planning for the day for the last 2 months, I was really excited. I invited all her friends and kept the theme as red, as I really resonate the color red with her. Apart from that, I told all her friends to wear something red and bring something red to her birthday. She really enjoyed her day, and how I concluded it? Making her happy makes me happy too. ठीक है. I really loved the conclusion as like सुनने में बहुत अच्छा लगता है. ठीक है. That was my answer. I'm pretty sure मैंने थोड़ा तो change किया होगा ये बोलने के like बोलते time. But the thing is कि this was more or less the same. Okay. Now coming to the next round, which is PI. तो PI round में क्या होता है? PI round में there are like 1-on-1 होता है या फिर 2 लोगों को एक साथ बुलाते हैं एंड सबको एक क्वेश्चन देते हैं. लेकिन हमारे टाइम में क्या हुआ था, दे कॉल्ड 10 of us एंड देन आस्क्ड अस 1 question each. ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन था, what was the last festival you celebrated? तो यहाँ पे कैसे आंसर करना है, पहले बताओ कौन सा फेस्टिवल तुमने लास्ट सेलिब्रेट किया था, फिर बताओ कि तुमने कैसे सेलिब्रेट किया था या फिर किनके साथ तुमने सेलिब्रेट किया था. लास्ट में यहाँ पे भी कंक्लूजन दो. ठीक. सो मैंने बोला था, मैम द लास्ट फेस्टिवल आई सेलिब्रेटेड विथ माई फैमिली वॉज Durga Puja. I really enjoyed this because last year I could not enjoy Durga Puja that much because I had my boards. But this year I made sure that I enjoy it to the fullest. I bought a lot of clothes for myself and my family. Then I went for pandal hopping and I really loved this time in Kolkata because Kolkata looks like it is a bride ready for its groom by how beautiful it looks. मैंने ऐसे इसको conclude किया था. This was my exact answer, मुझे याद है. Now this was the PI round. Now coming to the communication round. Communication round में क्या होता है? 1-on-1 questions होते हैं. एक लैपटॉप में HR होती है, I fly it directly, and वो आपसे question करते हैं. It is kind of like a communication more than interview. It is like a conversation. So the questions. First question मैं जब बैठी, she asked me that what did you do from the morning? So I answered कि मैंने सुबह से क्या किया है. For this you have to answer this as a routine question. Routine questions क्या होते हैं? आपको simple present में answer करना होता है. आपको बीच में linking words लगाने होते हैं, not just and. You can use these linking words. These are very important whenever you are giving like routine answers. Like let me give you one example for this question. Particularly like what did you do from the morning? I answered
Ma'am, today I woke up a little early as I had this interview. Then I did my daily morning rituals. I brushed my teeth and I got ready for this interview, did my makeup. I was really happy with how the makeup turned out. Afterwards, I boarded the cab with my mother and came to the interview venue. I was really shocked to see how many people are here, but I knew that I had the confidence to go through this process. मैंने ये आंसर दिया था, मोर और लेस सेम था, बट लुक हाउ आई डिड नॉट यूज एंड हर एक सेंटेंस के एंड में. दैट साउंड्स वेरी कैसा सा, ठीक है. सो डोंट डू दैट. ऑल्सो द थिंग इज कि आप जब बार बार एंड यूज करते हैं तो वी डू दिस थिंग की एंड सिंग एंड देन हम सोचने के लिए बैठते हैं, ठीक है. विच आई डिड जस्ट नाउ बाय द वे. बट या फिर हम सोचने के लिए बैठते हैं एंड दैट काइंड ऑफ मेक्स इट कि हमको एक और लाइन ऐड करना ही है. सो आई विल टेल ऑलवेज, विच हमसे हमारे लाइक इंस्ट्रक्टर्स ने भी कहा था कि यूज स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक. मतलब आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, फुल स्टॉप लगाइए, स्टॉप करिए, स्टार्ट अगेन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके. सो कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, आप एक आंसर आपने दिया, वहां से ही वो कुछ पकड़ेंगे और उसको ही लेके आपको फिर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं इंटरव्यू देने में आई थी मेरी मम्मी के साथ. सो फ्रॉम देयर शी आस्क्ड मी दैट व्हाट डज योर मदर डू. सो मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट माय मदर डज. इसमें मैंने आई थिंक आई डोंट नीड टू आंसर दिस. आई थिंक you guys have your own answers for this. And then if you have a like working mother, you can explain her work, that like she does this. And if you have a housewife mother, then you can say that my mother like normally wakes up around this and then she does all the household chores. ऐसे आप कुछ भी पक सकते हैं, ठीक है, बोल सकते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड. एंड इसका आंसर तो हाँ, यस मैम, आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड. आई मेट हर इन लाइक क्लास 11th. ऐसे आपको आंसर देना है, आपका सिंपल आंसर है. ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. देन शी आस्क्ड मी टू टॉक अबाउट हर. तो मैंने उसके बारे में बात किया था, दैट शी लाइक she studies in this college, she's doing this degree and all of these things, how I met her, how I feel about her. ऐसे आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है. नाउ उन्होंने मुझसे कुछ तो एक हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा था, बट आई रियली डोंट रिमेम्बर द हिंदी क्वेश्चन. मैंने कल लाइक 1 घंटा लगा के मैंने सोचने की कोशिश की, मैंने पुराने सारे चैट्स देखे, मैंने इसको किसी को लाइक कहा था कि नहीं, बट आई रियली डोंट हैव एनी लाइक क्या बोलते हैं उसको, आइडिया. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा. तो मूविंग ऑन टू द मिडिवल क्वेश्चंस. मिडिवल क्वेश्चंस वर लाइक कंपैरेटिवली थोड़े से वो थोड़ा टफ होता है. मतलब पीएचडी के क्वेश्चंस ना नॉर्मल इंटरव्यूज से थोड़े टफ होते हैं. आई फील लाइक दिस. मतलब आपको टेस्ट करते हैं वो बहुत, कि एक बार इधर गए, एक बार उधर गए, इस टॉपिक पे एक बार, उस टॉपिक पे एक बार. लाइक they are asking you about your hobbies, suddenly they are going to AI. So this is how PhD works. So PhD थोड़ा टफ होता है, I will say. मुझे तो लगता है like PhD बहुत टफ होता है. मिड लेवल में क्वेश्चंस थे. फर्स्ट, डू यू यूज सोशल मीडिया. सो या इट्स नॉर्मल है कि हाँ मैं सोशल मीडिया यूज करती हूँ. आई यूज सोशल मीडिया. आई नॉर्मली यूज इंस्टाग्राम मोर देन एनी अदर एप्स. आई ऑल्सो यूज यूट्यूब समटाइम्स. आई वॉच दिस, आई वॉच दैट. नॉर्मल आंसर करो, 7 sentences enough. नेक्स्ट इज, what was the last content you posted in your social media. So मैंने यहाँ पे एक रील की बात की थी जो मैंने पोस्ट किया था, लेकिन वहां पे मैंने गलती की थी. when you were talking about the views, normally हम कैसे बात करते हैं ना, कि मेरे इसमें 200K व्यूज आए थे. डोंट से के, ठीक है, 200,000 व्यूज आए थे, ऐसे बोलना है, ठीक है, क्योंकि शी पॉइंटेड आउट दिस. एनीवे, मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डू यू स्पेंड टाइम when you go out with your friends. यहाँ पे तो normal answer की we click pictures, we talk about life. So I'm not talking about the answer. Then question था, do you think today's generation is more invested in posting on social media than enjoying the moment? So you can answer this question like this. Yes ma'am, I believe that today's generation is more invested in posting about the moment than living it. But I believe that when you are present in the moment, you should feel it, you should gather everything that you can from that moment so that you can feel it afterwards, and you can take pictures, you can post it after you are like in home in your cozy bed and just scrolling through Instagram. That is what I do. I believe that posting afterwards can also give you better understanding of the songs you want to use in that post. मैंने ऐसे कुछ personalize करके थोड़ा सा humor लगा के आंसर दिया था, and the answer was really good by the way, ठीक है. So you can
use that. Anyway, same questions आपको मिलेंगे कि नहीं, that is also not like 100% नहीं है श्योर। क्या मतलब इतने क्वेश्चंस होते हैं कि यही क्वेश्चंस आपको मिलने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल प्रैक्टिस दीज। देन फाइनल इवैल क्वेश्चंस आई विल से कि मेरे बहुत आसान आए थे, उतने डिफिकल्ट नहीं आए थे। एंड जो भी क्वेश्चंस आए थे आई प्रैक्टिस दोज, लाइक कोई नया क्वेश्चन नहीं था। दैट वाज आल्सो प्लस पॉइंट फॉर मी। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इट गोइंग। इट इज लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन कि सुबह से क्या किया, फिर से तुमको कहना होगा। नेक्स्ट इज टॉक अबाउट योर पीएचडी जर्नी। सो यहाँ पे आप अगर नॉर्मली इंटरव्यू दे रहे हैं तब तो आपको ये नहीं करना होगा, ये आपको प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल इवैल फॉर पीएचडी, then please prepare this question because this is very important question that talk about your PhD journey. Then you can talk about the कैसे शुरू हुआ था, then बीच में आपको कैसा फील हो रहा था, how you were struggling because of your like mistakes, how did you like rectify them. ऐसे आपको conclude करना है, ठीक है कि हाँ this was tough but I really enjoyed this phase. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज योर फेवरेट बैचमेट। तो मैंने यहाँ पे मेरे फेवरेट बैचमेट की बात की थी from PhD. If you are not from PhD, you don't have to think about it. You can move on to other questions. But if you are from PhD, prepare this question. So मैंने बात किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक गलती की थी, या ये मैं आपको बताने के लिए like I want to talk about this because I did not know it before they pointed out. I talked about my favorite batchmate and I said ki I gossip with her normally. So then the interviewer cross-questioned me that Pranita, do you think that gossiping is good or bad? As per the dictionary, gossip is a negative word. मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो don't use gossip. You can use conversation. Don't even use chit chat. Chit chat is also a very casual word. So gossip और chit chat आप use नहीं कर सकते। Gen Z words तो use करने से आप दूर रहें। Gen Z word यहाँ, आप यहाँ दूर, ठीक है? Like तो बहुत सारे words है like wanna, gonna, देन है क्या बिकॉज नहीं होता, वो बिकॉज होता है। इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम, लाइक मुझे नहीं, आई हैव सीन मेनी बैचमेट्स लाइक सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दिस pronunciation, this is British pronunciation and because is like American pronunciation. Okay, both are correct, but normally we like in Indians we talk in British English and we can't use American English. Okay, because Indigo, these people, they prefer British English. Like they don't want you to talk in that accent. Okay, but you have to have that proper like pronunciations. Okay, so because okay. देन हो रहा है क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉसिप। ये तो मैंने बोला कि गॉसिप के बारे में बताना है, मैंने बताया था, बट नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं आता, मैंने गलती की थी इसलिए मुझे क्रॉस क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ट वेकेशन मेमोरी विथ फैमिली। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप अपना बताएंगे कि यहाँ गई थी मैं, ये किया था मैंने, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन वाज, देखो वेकेशन का पूछा, कहाँ टॉपिक जा रहा था, वहां से इन्होंने जंप किया द इफेक्ट ऑफ एआई इन ह्यूमन लाइफ। तो जंप वाज वेरी लाइक दिस एंड मुझे तो I was prepared for this answer because like we did a lot of AI वाला answer and I will also suggest to you कि normal जो basic AI वाले questions है ना कि can AI replace cabin crew, can AI replace teachers, like ऐसे क्वेश्चंस आपको रट के जाने हैं। रट के मतलब एक ही आंसर होता है कि नहीं वो तो फीलिंग्स नहीं रिप्लेस कर सकते, वो तो आपका एम्पैथी नहीं रिप्लेस कर सकते, ये सब आप बोल सकते हैं, ठीक है ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं यार, गर्मी मेरे दिमाग में चढ़। सो मेरा लास्ट पार्ट का साउंड पूरा कट गया था, सो आई एम रीशूटिंग दिस, यू बेटर लाइक दिस वीडियो फॉर दिस। So the last question was of the effect of AI in human life. So how I answered this, I gave one good point, one bad point and made a balance. Okay, make sure you answer these questions like that. Okay, so first question, point was key to give a bad point, and I gave the bad point as in how people misuse the AI and how people make fake videos or fake photos of other people, and which is a very big problem in nowadays.
एंड गुड पॉइंट मैंने दिया था कि हाउ पीपल यूज AI फॉर देयर स्टडी मटेरियल्स और देयर रिसर्च मटेरियल्स एंड इट रियली हेल्प्स देम टू नो द टॉपिक्स दैट दे डोंट रीड अबाउट और दे डिड नॉट नो अबाउट. सो मैंने इन दोनों को बोला और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया ऐसे दैट सर, we can get both the good points and good uses and bad uses from a certain thing. It depends on us and solely us that how we use it. ऐसे मैंने खत्म किया. ठीक है, खत्म. So that was all about the video, and if you liked the video, please drop a like and a comment, and if you have any more questions you can ask me in the comment section, or you can also DM me. This is my Instagram ID. You can reach out to me. I will surely answer you. And because मैं अभी वेली बैठी हूँ, मेरी अब तक ज्वाइनिंग डेट नहीं आई है. Apart from that, thank you for like listening to my yap non-stop for I think 10 minutes. बहुत बड़ा हो गया है, लंबा. ठीक है, इसलिए फोन काम नहीं कर रहा है. Anyway, thank you for listening to my yap again. I love you all. I'm really moved by the response I got in my last video. It got almost like this 1K, and that is my first 1K in my channel. Means a lot. Thank you very much, and goodbye. And drop a comment how my makeup is looking. Okay, bye.